हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक 29 साला खातून अगवा को गिरफ्तार करके 12 घंटे के अंदर अगवा का मामला हल कर लिया और 1 साल की बच्ची को बचा लिया। गिरफ्तार खातून की शनाख्त दासरी मंजुला के तौर पर की गई है, जो एक भिखारी है जो कि कामारेड्डी में बस स्टैंड के फुटपाथ पर रहती है। पुलिस ने 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी और इसे गिरफ्तार करके 12 घंटे के अंदर अपने मिशन को कामयाब बनाया। पुलिस ने अगवाकार खातून को डबलपुरा पुलिस स्टेशन के करीब हिरासत में ले लिया और 1 साला मासूम लड़की को इसके चुंगल से आजाद करवाया। बादजा लड़की को इसके वालिदीन के हवाले कर दिया गया। All of you. Today early morning at 2 o'clock, we received a complaint from the victim, a mother of 3 childs, saying that her 1-year-old child was missing in the railway station when she was sleeping at the time. She was missed. So, based on her complaint, we registered a kidnapping case and verified the CCTV footages. And in that CCTV footages, we found a lady is took that 1-year-old girl and traveling through auto. Based on that CCTV footages, we verified around 50 to 60 cameras throughout the state, throughout the Hyderabad, and we found that accused lady at Dabirpura railway station, where we rescued the 1-year-old girl from her, and we took her and we handed over to the victim mother. In this one, this accused girl, Dasari Manjula, she hails from Kamareddy district, and she came in the yesterday along with her 2 children. When she was in the Kachigud